Hello students, this is our first lecture on reduction of second degree equations. Now, general equation of second degree can be written as like this. And also can be written as f of x comma y comma z is equal to 0, and this f of x comma y z is this general equation of second degree. The important point here is to be noted, this equation generally contains 10 constants, 10 arbitrary constants, and at least one of them is non-zero. It remains unaffected if we multiply or divide by any non-zero real numbers. So this general second degree equations is maybe hyperboloid, this may be ellipsoid, hyperboloid of one sheet, hyperboloid of two sheets, and cone, and it depends on the conditions. So let me check the one by one conditions for this general equations. The important definition here is diametral plane. So diametral plane definition: locus of the midpoints of all chords parallel to the given fixed line. This is called diametral plane of the given line. कैसे? ये आपका सेंट्रल कॉनिकॉइड, दिस इज योर गिवन फिक्स लाइन x by l, y by m, z by n, और इसके पैरेलल जो हैं ये आपकी लाइंस हैं, पैरेलल टू गिवन फिक्स लाइन. सो मिड पॉइंट ऑफ दिस system of parallel chords will generates a plane, and this plane is written as like this: L कर लिया फोर कर लिया x प्लस m कर लिया फोर कर लिया y प्लस n कर लिया फोर कर लिया z इज इक्वल टू, एंड दिस कर लिया फोर कर लिया x कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, कर लिया फोर कर लिया y कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन. दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x, with respect to y, with respect to z. So now from these equations, the coefficient of x, La, mh and ng, plus y coefficients and z coefficient, and these constants. Now another definition is principal planes. A diametral plane which is at right angle to the chords which it bisect called a principal planes. जब आपका डायमीट्रल प्लेन जो आपकी गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, इट मीन्स जो नॉर्मल है आपका प्लेन का वो क्या हो जाता है, पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन. इन दैट केस दिस डायमीट्रल प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन. तो इसको कैसे लिखेंगे, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है हमें प्रिंसिपल प्लेन की. तो देखिए, इन दैट केस जो आपका नॉर्मल है वो पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल. तो हमने लिख दिया प्रिंसिपल प्लेन देन नॉर्मल टू द प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन L, दिस इज 1. सो दिस इज योर डायमीट्रल प्लेन. तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोपोर्शन किया हमने लाइन के साथ, and this is equal to some lambda. यहाँ से इक्वेशंस मिली आपको, ये 3 इक्वेशंस वी विल सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. जो आपको सॉल्व किया आपके पास ये है, ठीक है. तो देखिए, आफ्टर सॉल्विंग दिस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर लैम्डा you will get a cubic. This is known as discriminant cubic, discriminating cubic, and where D is determinant of this, and this discriminant cubics gives 3 values which are non-zero, lambda 1, lambda 2 and lambda 3, and putting these lambda 1, lambda 2, lambda 3 one by one here, this is called principal plane. Now we have to obtain the center. तो center of the surface f x y z is equal to 0 के लिए can be obtained by simply curly f over curly x is equal to 0, curly f over curly y is equal to 0 and curly f over curly z is equal to 0. यहाँ से आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी. उन 3 इक्वेशंस में से हमें
एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज योर अल्फा बीटा गामा, दिस इज योर सेंटर. So equation reduced or transformed in this. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 are obtained from discriminating cubic, and d dash is this, where alpha, beta, gamma are the centers of the given surface. तो वन बाय वन करके देखते हैं इसको. When all the characteristic roots of discriminating cubic are different from 0, so in that case we will obtain ellipsoid, hyperbola of one sheet, hyperbola of two sheet, and this is gone. So all the characteristic roots are lambda 1 and lambda 3 for different from 0 if determinant is not equal to 0 for this discriminating cubic. So find the center. center के लिए हम कर चुके हैं. सेंटर के लिए कर लिया फोर, कर लिया एक्स, कर लिया फोर, कर लिया वाई, कर लिया फोर, कर लिया जेड इज इक्वल टू. यहाँ से आपके पास सेंटर मिलेंगे. नाउ आफ्टर वी विल शिफ्ट द ओरिजिन टू द सेंटर, देन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन विल बिकम दिस, वेयर डी डैश इज दिस. नाउ दिस इक्वेशन रिड्यूस्ड इक्वेशंस इनटू फॉर्म lambda x square plus lambda y square plus lambda 3 z square plus d dash is equal to 0. Now the fourth option is find the direction ratio of the axis, या बोलें the find direction ratio of the principal planes. So we can find using equation. हम कर चुके हैं ये. तो इनसे यहाँ आपके पास different values for lambda you will get. Solve this equation for different value of lambda, you will get answer, and these different principal planes. And principal plane can be obtained by lambda this lx plus my plus nz plus ul plus vm plus wn is equal to 0. यहाँ पे पास 3 प्रिंसिपल प्लेन्स मिलेंगे फॉर 3 डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक वैल्यू के लिए. तो आपकी डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक होंगी, जो डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक है वो आपको डिफरेंट 3 वैल्यूज़ देगा. उन डिफरेंट 3 वैल्यूज़ के लिए आपके पास इक्वेशंस मिल जाएगी. और दिस इक्वेशंस अगर तीनों के तीनों लैम्डा पॉजिटिव हैं यू विल गेट एलिप्सॉइड. इनमें से एक वैल्यू लैम्डा की अगर पॉजिटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको मिलेगा हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स. अगर 2 वैल्यू पॉजिटिव हैं आपको मिलेगा हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट. और अगर आपका डी डैश 0 आता है यू विल गेट कॉन एंड ऑल द 3 पॉजिटिव वैल्यूज. क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.